हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है या फिर हम डिग्री कह सकते हैं इट इज़ 2। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सो वन मोर टाइम द सेम स्टेप्स वी कैन फॉलो एज विल प्रेस मोड, विल प्रेस अंटिल विल गेट इक्वेशन। अब इक्वेशन को प्रेस करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो आ रहा है अननोन्स 2 एंड 3, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसको ये वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। अब हमें मिल रहा है डिग्री 2 और 3। तो आप देख सकते हैं इसका डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो हम प्रेस करेंगे ऑप्शन एज 2। सो इमीडिएटली इट विल आस्क फॉर फर्स्ट वैल्यू ए। अब जनरली ये किस तरह से होता है, तो इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1 है, विल प्रेस 1, बी -10 और सी का वैल्यू है 16। सो द फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक की टर्म है उसका वैल्यू हमें मिल रहा है 8 रूट्स। तो फर्स्ट रूट इज 8, विल प्रेस अगेन इक्वल, और सेकंड रूट हमें मिलेगा एज 2। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस टेक another examples as b is equal to 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. Again the same process, we'll repeat it one more time. Mode, press mode option until we get equation. In case of equation we have unknowns 2 3, and for degree we have to press this option. It will ask for 2 or third degree, so we are having second degree, so we'll press 2. It will ask for a in this case is 3. After that hit equal, b is -5 and c is 2. So we'll get the first root as 1 and the second root is 0.667. So this is how we can easily calculate, or we can say find the roots of quadratic equation. Last we'll take one more example as 2x square minus x minus 6 is equal to 0. So the same process, move on to mode option. In case of mode, go for equation, press this button, we'll go for degree, press second degree option. Now hit the values, a is 2, then b is -1 and c is -6. So first root will get x1 as 2, we'll press equal, second root is -1.5, that I can write as -3/2. So this is the way in which we can find roots of quadratic equations. Okay, next video we'll see how to find roots of quadratic equation of degree 3 terms. Thank you.